First of all, I want to know what you mean by the law of inertia. Any one of you. Law of inertia. Okay, I'll give you an example. An accident happened a few days earlier. रिया बेटा सुनाई दे रहा हूं मैं आपको? Can you hear me, Riya? Okay, Riya, let's start. I hope you are hearing me. Okay, beta. Now, there is a question about 6 or 7 people, they got killed when they were sitting on the railway track. It is a case of something in Madhya Pradesh or near Aurangabad. So, do you think that that accident can be avoided? Can we avoid that accident? If the driver has seen those passengers sleeping on the railway track, can he save them? Any question? Anybody? Any one of you? No, sir. Why, beta? Why? Because, sir, it is difficult to stop the train at such a high speed. Not even at the high speed. Let's say it may be moving with a speed of 40 kilometers per hour. But and, sir, more so, sir, its mass is very high. So, sir, to stop it, a huge amount of force is required. Very good. It will take time. Very good. Very good. So this is what I mean to say, the inertia. Inertia. Inertia means momentum. That is written by P, and that is equal to mv. Momentum is equal to mass into velocity. Got it? So what the inertia means, it is the momentum that is equal to P, represented by P, and that is equal to mass into velocity. Now this m is equal to mass. V is equal to velocity. Got it? So this is the main reason. If the mass is more, even the velocity is less, you cannot stop that train. चलिए मान लीजिए ड्राइवर ने 200 मीटर दूर से 300 मीटर दूर से देख लिया, few passengers are sitting on the railway track. He applied the brake, but he is not able to stop the train in the distance of 200 meters, despite all his efforts, because the mass of the train is so large. So the momentum of whole of the train is too big. So as to stop that train, you have to apply more force, and that require more distance to stop it. Okay? जैसे पानी के जहाज होते हैं बेटा, जब ये किनारे की तरफ आते हैं तो इनको रोका नहीं जाता, इनका इंजन स्टॉप कर दिया जाता, कोई ब्रेक्स तो होते नहीं है, तो इनका इनर्शिया इतना ज्यादा होता है कि they keep moving and they come up to the shore without any power. So this is what happens. The inertia is the basic, you can say, it's the basic property of the mass. कभी अगर आप लोगों ने कभी भी देखिए, आपके जितने भी टायर होते हैं, जितने भी कार के व्हीकल्स के टायर होते हैं, वो साइड से हैवी होते हैं, बीच से लाइट होते हैं. So that is the purpose of increasing the inertia of that wheel. Okay? कभी अगर आप पॉटर्स का व्हील देखेंगे, पॉटर्स व्हील्स में जो कुम्हार होता है, जो आपका वो अपने बर्तन बनाता है, उस पे घुमा के, वो साइड से हैवी होता है, बीच में स्पोक्स होते हैं. स्पोक्स का मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है. So the mass lies here. And जितना मास सेंटर से दूर होगा, उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा. तो वो इस चक्के को एक बार घुमा के छोड़ देता है और ये घूमता रहता है अपने इनर्शिया के कारण. अगर इसी मास को हम ऐसे करके छोटी जगह में इकट्ठा कर दें, तो ये जल्दी रुक जाएगा, ये देर से रुकेगा. So that is the reason mass is divided out of the center. So the inertia means the property of a body to continue its motion of rest or of motion.
until we apply some external force to stop it. अब देखो बेटा होता क्या है, I want to share one of the video. Let's say if it is there. I want to share a video. Just a minute. Is the flame is visible to you? Are you able to see the flame? Any one of you better know. It's not visible. Just a minute. Now, is the flame visible to you? Yes, sir. Okay. Now look, this is what happens in the space. If you lit a candle in the space, in the spacecraft, it will lit like this, rather than the flame goes up. As I shown you in the flame on the day before yesterday, that the maximum, you see, there is a blue color light here, which is extremely hot. And the red and the less red portion is not that hot as the upper part of this flame is hot. Okay, this is another concept. Now look, this is the flame in the space. This is how, if you lit a candle in the space, how it looks like. So this is the thing which I want to share. You look, without the gravity, even the flame is coming down. Okay. Another thing which I want to share. Now look. Is this video is visible to you? दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Okay. This is the launch of a space shuttle, which is you can say a man, you can say human space shuttle, which goes to the space, and the people, they still live in the space for years together. The people get changed and there's space station in the space. Now look how the life is there in the. Now look, you see the things are floating. They are floating in the air. This is what the space or the you can say astronauts, they feel inside the space station. They are flying from here to there without feeling any of their weight. The weight is zero, but the mass is not zero, because the mass is the volume into density. What the mass means? It is volume into density. So the man is there, it occupies the space, he occupies the space, his density is there. So the mass is there. If he is of 70 kilogram, he is of 70 kilogram there in the space too. But he is flying, he is floating from one place to another. So this is known as the weightlessness. It is the zero gravity. It means the person feels weightless
when you go in the space. Now look again, दिखाता हूँ. Sir, good morning, sir. Good morning, Peter. How are you? Sir, I'm good. Sir, I got late due to It's some okay. network error. It's my mistake. I was unable to inform you yesterday. Now look at the hair of this lady. They are just going above in the upward direction. So this is the condition of weightlessness. So this is how you feel in the space. You can fly from one place to another. I'll show you some other picture. Just wait a second. Just a second. I'm just opening the file. Anyway, so beta thing is that just a minute. Okay, I'll show you tomorrow. Let's start the topic. Okay. चलो बेटा, मैं इसके बारे में आपको फिर कल एक पूरा प्रॉपर लेक्चर है मास इनर्शियल मास के बारे में दोबारा से बता दूंगा कि इनर्शियल मास होता क्या है. ओके. मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि जो इनर्शियल मास होता है दैट इज द मास which a body carries. Even if the weight is zero in the space, you feel weightless. Weightless means, what is weight? It is the attractive force produced by gravity of earth. जो हमारा वेट होता है बेटा, वो वजन का मतलब है कि हमें अर्थ कितनी ताकत से अपने अंदर को खींच रही है. बट जब हम स्पेस में चले जाते हैं, स्पेस में जाने के बाद ग्रेविटी का इफेक्ट जीरो हो जाता है. ये अर्थ है, इसकी ग्रेविटी यहाँ पर G इज इक्वल टू जीरो हो गया. तो वेट तो जीरो हो गया, बट मास जीरो नहीं होगा. मास इज देयर. सो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. So the unit of mass is kilogram, whereas the mass of or the unit of weight is Newton. Got it? The unit of weight is Newton. So this is how the inertial mass means. अब होता क्या है बेटा, स्पेस में अगर आपको जाके मैं कहता हूं कि इसको मास को मेजर करिए, मैंने कल आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया था. आई विल शो यू अगेन कि हाउ इट वर्क्स.
Look beta. Now look, yesterday I showed you this. Is this screen is visible to you, Aditya? Yes, sir. No. Concepts in previous science classes. Measuring the mass of an object directly and quantitatively can be a very difficult task, mainly because of the mass's interaction with the gravitational pull of the Earth. The inertial balance fills a void in your physics lab that cannot be filled with any other experiment associated with determining mass, utilizing a method that is independent of Earth's gravitational field. The inertial balance is clamped to a lab table, and a known mass is placed into one of the pre-drilled holes in the tray. When the balance is... देखो बेटा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इसने बताया है, या कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 2 स्ट्रिप लगा दी गई हैं। वो 2 स्ट्रिप को जब हम हिलाएंगे तो वो ऐसे ऐसे हिलते हैं, जैसे झूला हिलता है आपका। अगर हम झूले पे वजन बढ़ा देंगे तो इसकी जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है वो चेंज हो जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था इस बारे में कि टाइम पीरियड is a function of t is equal to 2 pi under root m upon k. This is what I taught you yesterday. कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो ये हिल रहा है ऐसे करके, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि जो लोहे की पत्तियां हमने लगाई हैं साइड में वो कितनी स्ट्रांग है। K is the फोर्स मास रिलेशन। मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा बेटा होता क्या है। देखिए, अगर आपने कभी पेन के अंदर देखा होगा तो पेन को जब आप ऐसे ऐसे जॉटर करते हैं, उसको दबाते हैं, तो होता क्या है बेटा कि वो स्प्रिंग होता है जो उसको बार बार ऊपर नीचे लेके जाता है। मगर जो आपके पेन के अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है उसी तरीके का स्प्रिंग आपकी कार में लगा हुआ होता है, मगर वो स्प्रिंग बड़ा मोटा होता है, भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि गाड़ी का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसको संभालने के लिए वी नीड ए बिगर स्प्रिंग। तो बेटा उसी तरीके से जो के होता है यहाँ पे, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल, कि किसी मटेरियल को झुकाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको। बट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द स्ट्रिप्स व्हिच वी आर यूजिंग। तो ये ऑसिलेशंस होते हैं, जब मास बढ़ाएंगे तो इनका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, यानी धीमे हो जाएंगे। और जितना ये धीमे होते हैं उनके रेशो को निकाल के हम इजीली इनर्शियल मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर तराजू से नहीं तोल सकते क्योंकि वहां पे ग्रेविटी तो काम कर ही नहीं रही। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, देखिए, इफ यू गो इन द लास्ट लेक्चर, यहां मैंने बताया था दिस इज अ ग्रेविटेशनल मास, दिस इज द ग्रेविटेशनल मास बेटा। ये ग्रेविटेशनल मास है, यहां पर भी जी एक्ट करता है नीचे को, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पर जो हमारा ग्रेविटी है वो भी इसको नीचे को खींच रहा है, वो भी इसको खींच रहा है, तो यह जी एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये तराजू ऊपर नीचे चलता है। मगर अगर आप इसको स्पेस स्टेशन में ले जाएंगे तो ये तो कहीं को भी नहीं जाएगा, उल्टा भी कर देंगे तो भी इसके अंदर से संतरे नहीं गिरेंगे, आपका मास नहीं गिरेगा, क्योंकि कोई खींच ही नहीं रहा उनको। सो उस कंडीशन में हम लोगों को एक इस तरीके का डिवाइस लगाना पड़ता है, हमें इस तरीके का सिस्टम लगाना पड़ता है जो इसकी जो ग्रेविटी पे एक्ट करना करता हो, तो उसको हम इनर्शियल मास कहते हैं। कैलकुलेट करने में कोई अंतर नहीं है, दोनों का बराबर निकल के आएगा। बट ग्रेविटेशनल मास को हम अर्थ के ऊपर मेजर कर सकते हैं, अगर हम अर्थ से बाहर चले जाते हैं तो उसको मेजर करने का तरीका इनर्शियल मास हो जाता है। उसको फिर दोबारा देख लीजिए, मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ये देखिए, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, मैंने बताया था। Here m1 and g is the gravity, m1 is the mass, m2 is the mass. When they both are equal, g तो बराबर होता ही होता है, तो m1 when equal to become m2, तो इससे क्या होगा, दोनों का मास बराबर हो गया। हम 1 किलोग्राम मास एप्पल का या ऑरेंजेस का तोलकर हम आपको दे देंगे।
दूसरा मैंने आपको इनर्शियल मास बताया था, ये इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म लगा रखा है। अब यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये देखो, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बेटा, इस पे भी हमने कोई सामान नहीं रखा। ये देखो, ये देख रहे हैं, अभी हमने इस पे कोई सामान नहीं रखा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। और अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ नहीं है, दो पत्तियां लगी हुई है बेटा इधर, और सामने वजन रखने के लिए एक ट्रे रखी हुई है। अब इसने पहले एक वजन को रखा है, इसने वो 1 किलोग्राम मास मान लीजिए। तो देखिए इसके ऑसिलेशंस, इनका टाइम पीरियड हम काउंट कर सकते हैं स्टॉप वॉच लेके कि कितने ऑसिलेशंस 10 सेकंड में हुए। अब हमने एक की जगह 2 मास रख दिए। अब 2 मास रखने से इसके ऑसिलेशंस देखिए धीमे हो गए, स्लो हो गए। तो मास को अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ये मास ऑसिलेशंस को स्लो करता चला जाएगा। इन्हीं टाइम पीरियड के मेजरमेंट से हम इनर्शियल मास को गैदर करते हैं। ये देखिए, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k, ये मैंने आपको कल बताया था पूरा। एंड टी स्क्वायर, अगर मैं इसको बराबर कर लेता हूं, मैंने फिर कल आपको ये भी बताया कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। जब हम ऑरेंजेस को एप्पल के बराबर करेंगे, जब दो डिफरेंट चीजों को आपस में इक्वेट करेंगे, देन वी हैव टू पुट ए प्रोपोर्शनल साइन। ओके, नाउ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m because k is constant, 2 pi is constant. The value of 2 pi is 6.28, pi is 3.14, so 2 pi is 6.28. तो ये कांस्टेंट है, इसमें k कांस्टेंट है, k is the spring constant और the constant of the metal। तो ये दो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द